You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. In December 2019, a major virus outbreak engulfed the Chinese business district of Wuhan. We have a simple message for all countries. Test, test, test. As authorities struggled to understand the nature of the virus, it spread across continents and took just 3 months to bring the world to a standstill. While theories have been debated about its origin and its impact in China, the rapid increase in number of cases and deaths across Europe and America have raised the guards of the governments across the world, having their work cut out. As the number of cases started increasing in the subcontinent in late March, Prime Minister Narendra Modi took a decision to bring the entire 1.3 billion population of India under lockdown. जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। লকডাউনের মধ্যে সারা ভারতবর্ষব্যাপী সারা বিশ্বব্যাপী আজকে আমাদের সকলকেই থাকতে হচ্ছে একটা করুণ যন্ত্রণা যে আগে কখনো দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेडिकल फैटर्निटी द्वारा दिए गए निर्देश और सुझावों का पालन करना बहुत जरूरी है। Despite this giant measure, it has failed to keep the numbers down. Even after an effective lockdown of 2 months, the numbers keep on growing fast. Many have blamed the government for its hasty decision, lack of coordination and organization in implementing such a mammoth task. 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर। हाँ, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। क्या करेंगे? और आप करते क्या थे काम वहाँ पे? मजदूरी। It has meant that thousands have been stranded away from home, without proper food, water or shelter, desperate to get back. खुद सेल्फ काम करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हजारों लोग को एक बस में भरेंगे तो कैसे होगा? हम नहीं भर रहे हैं, ये खुद भर रहे हैं। पूरे से डंडा बीमार है, उसका हाथ भी फ्रैक्चर होने बचा है। राशन पानी लेने जा रहा था तो उधर मंडी गोल चक्कर में देखो सारे डंडा मार दिए। আর বাংলার নামে পুরো ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোকে কন্টিনিউয়াসলি করে বেরিয়েছে যে বাংলা করছে না। দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। इस समय सभी राज्यों की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए। র‍্যাপিড টেস্ট কিটস, টেস্টিং কিটস যা পাঠিয়েছিল সব উইথড্র করে নিয়েছে। কেন? উইথড্র করার জন্য অ্যাডভাইজারি এসেছে। তার মানে যা দিয়েছিল তার টোটালটাই উইথড্র। তার কারণ ডিফেক্টিভ। কার দোষ? As the central and state governments engage in their usual blame games, this crisis has utterly exposed the poor health infrastructure of the nation due to years of low allocation of funds in union budgets. With $62.7 spent on healthcare per person, it is one of the lowest in the world. कोरोना ने अपने को ये सिखा दिया, 70 साल भारत को हो गए आज़ाद हुए, हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम लोगों ने अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, नर्सेज इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। Since 2006 to 2016, percentage of GDP invested in healthcare has been a constant 3.6%. You know, the institutional delivery model that the country has had, institution is not only four walls. You know, you have to have systems within it. Absolutely, and which have not happened, and then the poor funding has led to poor availability of drugs and diagnostics. India currently sits at 145 out of 196 countries in the healthcare system rankings. In our own neighborhood, we see Sri Lanka has done it very well. Even Bangladesh and Nepal have started doing it quite well in terms of good primary health care. In an unequal society that India is, in a large measure,
It has to be the public system who has to provide predominant care in the country. About 63% of the healthcare expenditure is out of pocket. So clearly, many of the Indians are unable to afford the healthcare expenditure. So we need to find solutions for that. And we can't depend upon a very expensive model. And much of the brunt has to be borne by a competent and compassionate public sector. Though the ratio of number of doctors to people almost meets the WHO standards, India has one of the worst number of hospital beds per million population in the world. So we do need to spend a lot more than what we are doing now. We also need to spend it better. We cannot spend it mostly on tertiary care. We need to spend it a lot on primary health care and district hospitals. 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमने 120 पेशेंट तकरीबन क्वारंटीन सेंटर भेजे हैं अस्पताल से और बाकी बहुत सारे पेशेंट को एडमिट भी किया है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैट से एक पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। But being a country where mob justice is still prevalent, doctors often get the hard end of the stick for faults which are rarely their own. जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। There have been several incidents where doctors have been attacked if they fail to save a patient. बार-बार इंटीमेशन देने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अभी तक मेजर्स नहीं लिया गया है। In 2019, recurrent occurrences of such incidents influenced a major protest by the junior doctors in West Bengal, which gained solidarity across the country. जो कोलकाता के अंदर जो अटैक हुआ इंटर्न डॉक्टर के ऊपर, रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर, तो उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हमारे स्ट्राइक के ज़रिए से हम स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि स्ट्राइक डॉक्टर के ऊपर ऑल इंडिया में या स्टेट में किधर भी हो, हम सब एक साथ हैं। While the government made certain changes and promised increased protection, this has hardly been the story on ground, with several instances of doctors facing attacks and victim to stigma in such unprecedented times. हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। वहाँ पे हमारे डॉक्टर लोगों को खूब मारा, वहाँ पकड़ के खेल लिया इन लोगों को। ठीक है, हम तो सभी जान बचा के भागे हैं वहाँ से। ठीक है, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। हाँ सर, अतरपाल बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, हमें पुलिस नहीं दी गई। 4 पुलिस वाले खड़े थे, सिर्फ कांस्टेबल वहाँ पे। The governments, without having any options left, had to announce fines and jail time for anyone committing such crimes. कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। Modi tried to pacify the situation and bring forth a sense of togetherness amongst the people with flower petal showers and candlelight displays as encouragement for the health professionals working in the forefront. मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक-एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। Many doctors, though, claim that such shows of solidarity are useless as long as the real issues are overlooked. 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद इतना सा अमाउंट खाने का दिया जा रहा है, वो भी कचौरी वाली पैकिंग है। ये एक ब्रेड पिज़्ज़ा रोटी की जगह पे ये मिल रहा है। For the lunch also we had the same meal and that was completely taken out from the freezer and given to us. We couldn't even eat any of these things. देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
हमारी सुरक्षा पहले चाहिए हमारे को। ये 1 करोड़ रुपए का टीवी भाषण दे दिया, 1 करोड़ रुपए मरने के बाद मिलेगा। जीते जी तुम खाना नहीं दे रहे हो। Lack of proper protective gears and testing kits have made the doctors and nurses the most vulnerable to the virus. मुझे फिर अजीब से बुखार नहीं छोड़ रहा था, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब देख लीजिए, बता लीजिए डॉक्टर साहब। टिकट ऐसे दे रहे हैं जैसे हमने साथ में शादी में पहन ली है इसको। वो भी घटिया, पसीना आता है तो अंदर से बाहर आता है। जब पेशेंट सस्पेक्टेड आएगा या पॉजिटिव आएगा तब, और उसके बाद में नॉर्मली कोई भी टिकट नहीं मिलेगी आपको। क्या वो मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स। অনেক বড় বড় কথা বলছে, পাবলিক পিপিই নেই, সব দেবো কোথায়? Several of them have tested positive in recent days, making these hospitals COVID-19 hotspots, forcing the authorities to shut them down, further worsening the situation. The government is not treating the doctors and nurses well either, with reports emerging a lot of their salaries have been reduced, and some of them having not been paid for months. From my own eyes, they're not testing people. They're just not testing them. There's so many people who are coming with symptoms. They're going to go out and spread it to other people. We don't know how many people are affected by it. The doctors are being forced to keep shut about the shortcomings of the government, violation of which is bringing about brutal police action. Here we see suspended Dr. Sudhakar Rao being beaten up by the police for voicing his opinion on lack of proper equipment to tackle the pandemic. With constant harassment of healthcare workers by authorities, it seems the task in hand of combating COVID is getting steeper than it already is. I am currently at home trying to work from home, feeling highly demoralized and insulted by the Badarpur police telling me that I am the one who is carrying infection across borders and have to be stopped from going home. I am involved in COVID care and patient care at many pertinent areas in the hospital, and keeping the likes of me at home is the most ununderstandable policy in the world. With the number of cases increasing exponentially, more and more hospitals are being converted into COVID centers, denying normal patients treatment, and in some cases even moving them out, resulting in a lot of collateral deaths. Healthcare is not the only crisis being faced by India. The lockdown has left the economy stranded, with thousands of jobs lost and shortage of supply, leaving millions fighting for survival. कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? Flouting of the lockdown and social distancing rules by the citizens haven't helped the case either, hindering the path to recovery and putting pressure on the already burdened healthcare system. जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। Gradual easing of the restrictions to end the lockdown having already been started, there is a fear that the influx of cases will overwhelm the system. मेरा मम्मी का जब ऐसा हुआ, मम्मी को तो देख नहीं पाए, ना बॉडी दिया गया, ना कुछ, हम लोग को देखने का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। हम लोग पूछे सर क्या हुआ उनको, कैसे, बोले कि हार्ट अटैक किया। फिर वो लोग एक रिपोर्ट भेजे, उसमें पॉजिटिव दिखाया है। पापा जाने के बाद अब नहीं लगता कि मेरे पापा लौट के आएंगे। अपने माँ को तो खो दिए, प्लीज मेरा पापा कहाँ है, कैसे है उनका, आप लोग मुझे खबर दीजिए प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ। The only silver lining, Kerala's recovery cases. जहाँ पर प्रिकॉशंस ली गई हैं तो फैला नहीं है। मैं इसमें केरला गवर्नमेंट की दाद दूंगा, वहाँ के लोगों की दाद दूंगा कि सबसे पहले जब उनको इन्फेक्शन हुआ, सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। With one of the highest number of cases, when the lockdown was enforced, Kerala
took just a month to flatten the curve. It shows how preparedness, coordination, and organization can rapidly get this situation under control. Nobody said that it's an easy task. With countries far more developed, with far more resources, struggling to keep the situation under control, it is evident that India, even with its limitations and rising number of cases and deaths, is doing a commendable job. एक कोरोना सस्पेक्टेड केस आ रहा है, आप अपनी टीम तैयार कीजिए. But we shouldn't overlook the fact that with proper investment in healthcare infrastructure by previous and current administrations, we should have been in a better position. Nobody knows when this pandemic will be over, but when it does, let us pledge better medical facilities, because that is the fundamental right of an individual in any civilized society.